the next topic is your weights in deep network. So weights are very important part of the neural network, right? In the architecture of ANN, artificial neural network, each neuron is connected to other neurons by means of directed communication link, and each communication link is associated with the weights. And in neural network, right, every neuron, right, suppose this is my input neuron, right, it is connected with the output neuron, right, with the connection link, right, this connection link, right? And this connection link has the weight. Without weight, right, we are not able to connect this to neuron. मतलब every neuron in neural network in ANN, every neuron must have a connection with the other neurons, right? But via the weights. वो connection को बताए ना हम लोग को represent करना है, तो we have to use a weights. The weights contains the information about input signal. This information is used by the network to solve the problem. तो वी कैन से दैट जो वेट रहेगा, वेट, राइट, दिस वेट इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ द न्यूरॉन, और वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूरॉन, पावर ऑफ द न्यूरॉन, राइट, इज कॉल्ड एज वेट्स इन द न्यूरल नेटवर्क. तो वेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइट कनेक्शंस. और वेट मैट्रिक्स, व्हेन यू आर सेइंग वेट मैट्रिक्स, देन we have to use the term connection matrix. That means to represent the weights, to represent all the weights in the neural network, we use weight matrix. हमको weight matrix बनाना पड़ेगा. That weight matrix is called as connection matrix, right? So now we can see here, right, ये दिख रहा है, this is a matrix, this is my matrix of weight. तो what happen, देखो एक तो ये matrix है, this is my first matrix और दिस इज माई सेकेंड. तो इसमें देखो क्या है, दिस इज n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, n क्रॉस 1, n रोज 1 कॉलम, एंड दिस इज योर n क्रॉस m मैट्रिक्स. तो नाउ टू रिप्रेजेंट द वेट मैट्रिक्स, आइदर वी यूज n क्रॉस 1 मैट्रिक्स और वी यूज n क्रॉस m मैट्रिक्स. तो दो अलग अलग सिचुएशन है, दिस आर द टू सिचुएशन, राइट, वी विल सी हियर. So now suppose we have a neuron, right? This is a simple neural network. So this is my x1, x2, x3 dot 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 xn, and in this case we have a single output. So what happened in this case, this x1 is connected with this w1, राइट. अब ये x2 से x2 का जो कनेक्शन होगा उससे होगा, राइट. वी कनेक्ट दिस x2, राइट, ये x2 को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज माई w2, देन w3 डॉट 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 wn. तो नाउ टू रिप्रेजेंट द वेट, राइट, मैट्रिक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग हियर वी राइट w1 w2 w3 dot 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 wn. So now this is my n cross 1 matrix, right? If you have a neural network, right, in that neural network only one output node is there. अगर उसमें एक ही output node है तो we will write the weight matrix like this, right? But we can have a multiple outputs also, right? Neural network में, right, we can have a multiple outputs, right? जैसे ये x1 है, x2, x3 dot 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 xn, and now we have a y1 output 1, second output, third, and dot 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 yn. So in this case this x1 is connected with this. So this is my, in this case this weight is represented by w11. Why w11 क्यों आ रहा है बोलो? Why we are writing w11? Sorry, हाँ 1 1 is there ना,
इसके लिए, ओके। तो वी हैव अ 1 1 राइट, तो इसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 1। देन इन दिस यहाँ पे क्या आएगा 1 2, देन 1 3 एंड देन लास्ट जो आएगा ये 1 n। इन द सेम वे राइट, ये यहाँ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 n एंड सो ऑन। ऐसे 3 का क्या आएगा बोलो W 3 1 3 2 3 3 3 n। ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा x n 1 W x n 1 W n 2 W n 3 एंड W n ले लो या इसको m ले लो m, तो ये क्या हो जाएगा n m। तो नाउ टू रिप्रेजेंट दिस बोलते ना इन मैट्रिक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग इन दिस केस 1 1 1 2 डॉट 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 1 n, देन 2 1 2 2 2 n, देन डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा इधर W n m। तो इफ़ यू हैव अ मल्टीपल आउटपुट यूनिट्स, अगर तुम्हारा मल्टीपल आउटपुट यूनिट्स है तो इन दैट केस क्या यूज़ करेंगे हम लोग बोलो n क्रॉस m मैट्रिक्स, n क्रॉस m मैट्रिक्स। तो एज वी कैन सी हियर राइट इन द डायग्राम, this is the weight matrix for single output unit and this is the weight matrix for multiple output units. Now next topic is your bias, okay. So now first of all we understand this bias, okay. The bias included in the neural network has its impact in calculating the network. तो एक चीज़ याद रखना, जो बाइस का रोल होगा ना, बाइस का रोल right, it is in the calculation of the net input only, right. After calculation of net input, right, there is a no role of bias, bias का रोल कुछ भी नहीं होगा। तो bias जो रहेगा bias, right, the first input given to the neural network, जो first input रहेगा ना, first input, that first input is called as bias, right. And this bias जो है ना, this bias is an optional, बोलो component, right. You may include the bias in the neural network or you may not include the bias in the neural network. Not compulsory कि every neural network has this bias, but weight is compulsory, okay. Weight always remember, weight जो है वो compulsory होगा, okay. So now suppose we have a input, right. This is my input. तो दिख रहा है यहाँ पे 1 लिखा है, दैट मीन्स वी हैव बाइस है, उसके बाद x1 x2 x3 एंड xn, दिस इज। तो टू रिप्रेजेंट द बाइस राइट, इन सम बुक्स वी यूज W0 राइट, मतलब उसके वेट को, टू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द बाइस वी यूज W0 राइट, और सिंपली B, और वी कैन राइट W0 मतलब J रहेगा यहाँ 0 1 या जो भी है 0 1 0 2 0 3। इफ यू हैव अ मल्टीपल आउटपुट नो, तो वी कैन राइट W01 W02 W03 एंड सो ऑन, और यू कैन राइट BJ B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइस इन द न्यूरल नेटवर्क। नाउ द फर्स्ट इनपुट रहेगा, the first input in the neural network, whatever the first input that enters into the neural network. Just example, we suppose we have a x1, then x2 dot 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 xn, n number of inputs, and this is my out, ये इधर आएगा, इधर आएगा, this is my W1 W2 and W3। नाउ एट द सेम टाइम देखो ऐसा भी लिखते हैं बाइस को, यू कैन राइट द बाइस हियर लाइक, और यहाँ से भी ऐसा रेड से बनाता हूँ मैं, और यू कैन रिप्रेजेंट द बाइस हियर, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो दिस इज 1
और इसका जो 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 वेट रहेगा वो मतलब या बी लिखो या W0 लिखो, राइट। आइदर यू कैन राइट W0 और बी, दोनों में से कोई, या फिर यहाँ पे भी ऐसा भी लिखते हैं कभी मतलब 22, तो दिस इज माई W0 या और यू कैन राइट एज बी। तो 22 याद रखो, वी हैव टू इंक्लूड द 22 इन द न्यूरल नेटवर्क। So now we all know the formula of this neural network, right? To calculate y in, the formula is I equals to 1 to n xi wi, right? This is the formula when we not included a bias. Bias is not included in the neural network. When you include the bias, the formula will become b plus summation of I equals to 1 to n xi and so when you include the bias, right, the formula will change. There is a some change. There is a small change in the formula. We just add a bias also. Okay. और bias में right हम लोग क्या करते हैं? What happen in this case? We multiply x1 w1 plus x2 w2, right? तो in the same way we multiply 1 with b ना और w0. तो 1 से multiply करेंगे तो same आने वाला है, b इंटू 1 तो b, देयरफॉर b प्लस हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे b इंटू नहीं आएगा, b इंटू 1 मीन्स b हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पे ऑलवेज 1 रहेगा, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑलवेज 1। 22 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऑलवेज ये 1 ही आएगा। तो टू मल्टीप्लाई विद दिस 1 वी गेट b, देयरफॉर वी आर राइटिंग हियर b। तो दिस इज ऑल अबाउट बाई। ओके, नाउ as I told you, the role of the bias is in to calculate the net input. Okay, y in right is a net input of the single node. If you have a multiple output node, right? If you have a multiple output node, in that case, this y in will become y in j. That means y in 1. This is the net input of the first node, first output node. Y in 2, it is a net input of the second output node. This is the net input of the third and so on. Therefore we are writing here y in j, right? To calculate y in j, right, y in j indicates if we have a multiple output node. That means maybe शायद the neural network looks like this, ऐसा कुछ दिखेगा, right? This is my y1, this is my y2, this is my y3. So we write this as yj. This is the output. The net input y in 1, y in 2 and y in 3. So this is we will represent this as y in j. So now y in j is your xi, that is mean x1, x2 and x3. So xi wij. So we can write, right? If we देखो यहाँ पे अब 22 include किया है, right? We are starting from 0. अभी तक मैं जो लिख रहा था I equals to 1 to n, that means we are not including bias. When we are writing this summation starting from 0 to n, that means we are including bias. So this is my bias. x0 w0j plus x1 w1j, x2 w2j and so on, right? So we can write this wx0 w1j, right? तो x0 तो 1 रहता है ना इसमें, right? Always याद रखना, this x0 is 1, so this will become w0j. And again this part will come into the summation. So we can write W0j or Bj. So this is my bias, right? Formula to calculate the net input. The role of bias in calculating a net input. So this is all about the bias. Now next, right? As we can see in the diagram, right? We also included a bias here. And this is my x0. When you multiply x0 bj, so x0 is 1 and bj, that will become bj. No need to write the multiplication of this. मतलब x0 को 1 लेके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली you will write bj. So this is the network with one output unit, multiple input unit along with the bias. Now next we have another diagram, right? This is also a bias, as we can see here. This is my bias. So in this case, right, we are taking bias as C.
C is nothing but your bias. So we write the equation as y equals to mx plus c. या पहले ऐसा लिख सकते हो c plus mx. First we write bias. So we can write, since it is an addition ना, तो we can write this as mx plus c. So this is nothing but the equation of straight line. Okay, so this is all about the